Hi my lovelies and welcome back to another makeup video. So today I'm gonna be showing you how I achieved this feature enhancing wearable glam look which you can wear with almost any outfit like Indian, Western or Indo-Western. So yeah, if you are interested then let's get started. So guys, as you can see, I have already started my makeup by using a silicone based primer and it's the Inside Cosmetics 3-in-1 primer. And after that primer, I'm gonna use the L'Oreal Paris True Match Super-Blendable foundation and I'm in the shade 7D7W Amber Doe Golden Amber. To keep it more natural and wearable, आज मैं कंसीलर एंड पाउडर वाला जो पार्ट है उसको स्किप कर रही हूँ एंड एक ब्राउन आई शेडो को पिक करके मैं अपनी फेस को कंटूर कर रही हूँ जस्ट टू एड सम फीचर्स एंड यू नो सम डेफिनेशन टू माई फेस. But if you have a lot of pigmentations or acne marks, then you should apply a concealer and also you should set that concealer with a powder. By the way, peachy pink shade लेके उसको as a blush apply कर रही हूँ and then एक light brown transition shade को लेके मैं अपनी crease को build up कर रही हूँ like so. Applying the same transition shade on my lower lash line as well, and then I'm taking a liquid glitter eyeshadow from Mars Cosmetics which is in the shade 03 Celestial Comet, which is a pure bronze kind of shade, you know, and then just blending out the edges of the liquid glitter eyeshadow. Then again taking the same dark brown shade to fill up the gap of my eyebrows. ओके सो मूविंग टू द आई लाइनर पार्ट. आज मार्स कॉस्मेटिक्स का ही एक पेन लाइनर यूज़ करी हूँ एंड एक सिंपल सा विंग आई लाइनर ड्रॉ करूँगी एंड उसके बाद इसको भी स्मच कर दूँगी. टेकिंग द ब्राउन शेड एंड आई एम जस्ट गोना स्मच द आई लाइनर. Okay, so after the brown shade, I'm picking this black shade to intensify the smudger effect, and actually I'm just gonna add some, you know, smoky illusion. Then as a final touch, I am reapplying the glitter shade and blending the edges out. उसके बाद dark brown shade से ही अपनी lower lash line को भी थोड़ा सा smudge कर रही हूँ. Then same eyeshadow palette से एक champagne gold color को pick कर रही हूँ, इसको as a highlighter अपने सारे high points में apply कर रही हूँ. एंड अपनी ब्राउ बोन्स एंड इनर कॉर्नर को भी सेम हाइलाइटर शेड की मदद से ही थोड़ा बहुत हाईलाइट कर लूँगी. फॉल्सेस अगर नहीं लगाओगे तो मस्कारा का ही 2 से 3 कोट अप्लाई करना इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. ओके सो फॉर द लिप्स पहले एक रेड कलर की लिप क्रेयॉन से अपने लिप्स को आउटलाइन कर लूँगी एंड उसके बाद एक ब्राउनिश न्यूड काइंड ऑफ शेड यूज़ करके अपने लिप्स को फिलअप कर लूँगी. Alright, so after all of these things, this is my final finished look.